उसके बाद हमारा फोर्थ एट्रीब्यूट था कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे. ओके, so this column index number, what we had done, we have just counted, okay, what was the index number for that. So it was fourth number of column from our table, so we have given it as 4. And then 0 we have given it for range lookup, like we want to have an exact match or an absolute sorry, approximate match. Okay, so for that we have given 0 or 1 based on our condition needed. So these four attributes were necessary for our VLOOKUP formula, that is lookup value, table array, column index number, and range lookup. Okay, so moving on to like next, इसको ही मतलब और थोड़ा कॉम्प्लेक्स इन लाइक यू नो जस्ट टू मेक इट मोर डायनेमिक. So what we will be using to just to find this column index number every time जब जहाँ पे ये हमारा टेबल था, राइट, ये टेबल में अभी जस्ट बिकॉज ये छोटा टेबल है वी आर एबल टू काउंट इट लाइक 1 2 3 4 की सैलरी वाज इन योर फोर्थ कॉलम. ठीक है, उसका इंडेक्स फाइंड करने के लिए. बट व्हेन यू विल हैव द लार्ज डेटा सेट दैट इज नॉट feasible for you to count. Okay, so how we can make it dynamic, that we will see with using match function. Okay, so let me open the sheet for that. Yeah, so when we have VLOOKUP with match, so first of all we will understand कि match function क्या करता है. Then we will understand how to use it in VLOOKUP formula. Okay, so first of all when we talk about match, अभी जहाँ पे ये हमारा main table है, ठीक है, ये main table में we have this employee ID, name, department, salary and joining date as your columns. Okay, so when I just wanted to find कि ये column का index क्या है, so as of now what I understand from the calculation that ये employee ID is at your first place. ठीक है, then name is at your second place, department is at your third place, salary is at your fourth place and joining date is at your fifth place. ठीक है, तो अभी जब हम लोगों को मैच से ये सेम जो अभी हम लोगों ने काउंट करके यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी, वी विल सी यूजिंग योर मैच फॉर्मूला. तो मैच फॉर्मूला में क्या क्या होता है, वी विल फाइंड द सेम इंडेक्स नंबर. ओके, बट डायनेमिकली यूजिंग योर फॉर्मूला. तो उसके लिए फॉर्मूला है फॉर मैच इज इक्वल्स टू मैच, देन ओपन योर ब्रैकेट, then you can give your lookup value. So in this case जब हम लोग अभी इसका कॉलम का इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं, राइट, व्हाट विल बी योर लुकअप वैल्यू. हम लोग किस चीज का लुकअप करना चाहते हैं यहाँ पे, कोई बता सकता है? यस yes? जैसे अभी हमें एम्प्लॉय आईडी को फाइंड करना है, राइट, फ्रॉम दिस टेबल का जो हेडर था. तो इन दिस केस आई हैव माय लुकअप वैल्यू एज माय एम्प्लॉय आईडी. तो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव अ एम्प्लॉय आईडी सेल रेफरेंस. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सेकंड क्या है मेरा लुकअप एरे. अब लुकअप एरे कौन सा है मेरा, ये मेन टेबल में मेरा हेडर इज माय लुकअप एरे, राइट. तो आई विल जस्ट पास दिस एज लुकअप एरे, क्योंकि मुझे फाइंड करना है एम्प्लॉय आईडी का पोजीशन फ्रॉम दिस ऑल द टेबल हेडर. ठीक है, आइदर यू कैन यू नो क्लिक एंड ड्रैग दैट, आइदर यू कैन जस्ट डू अ कंट्रोल शिफ्ट एंड. ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड से भी सारे हेडर्स यू कैन सिलेक्ट. अगर ये मल्टीपल यू नो इट्स गोइंग बियॉन्ड योर स्क्रीन, सिंपल कंट्रोल शिफ्ट एंड कर दो. ठीक है, उससे क्या होगा, तुम्हारे सारे हेडर्स सिलेक्ट हो जाएंगे. अगेन फॉर दिस हेडर यू नीड टू फिक्स दिस, राइट. अगर ये फिक्स नहीं करोगे तो क्या होगा, अगर इसको ये फॉर्मूला नीचे वाले उसमें ड्रैग करोगे, व्हाट विल हैपन कि ये जो तुम्हारा सेकंड जो वैल्यू है जहाँ से तुम्हारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है टेबल में, वो उसको कंसिडर करेगा. तो इसलिए यू नीड टू फिक्स दिस विथ योर F4. ठीक है, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज मैच टाइप. अभी इसमें मैच टाइप कैसा चाहिए हमें, एग्जैक्ट मैच चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, लेस देन. यहाँ पे हम लोग क्या मैच करना चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी नाम का जो कॉलम है वो ये टेबल में एग्जैक्टली एम्प्लॉय आईडी नाम से ही रहेगा और उसका मुझे इंडेक्स कॉलम इंडेक्स वैल्यू दे दो. तो व्हाट आई विल डू इट, I will do as an exact match. Okay, I'll close the bracket and enter. So can you see now for employee ID it has given it as 1. If I drag this formula, अभी name हमारे second place में था, right? So now यहाँ पे भी देखो आप name को उसने calculate करके दे दिया कि okay it is at your second place, third place, fourth and fifth. So in this way you can calculate your uh,
कॉलम इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग दिस मैच फॉर्मूला। इतना समझ में आया हम लोग मैच फॉर्मूला से क्या करना चाहते हैं? यू गाइस कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिप्लाई टू मी। यस, ओके, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल सी, जैसे अभी हमारे पास अगर ऐसा कोई केस है या फिर कोई सिनेरियो है जहाँ पे ये देखो मैंने अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लेके रखा है जहाँ पे आई हैव एम्प्लॉय आईडी एंड आई हैव डिपार्टमेंट, ओके। और मुझे क्या करना है कि ये वैल्यू में जैसे भी मैं ड्रॉप डाउन से कुछ और जितने भी मेरे पास कॉलम में सॉरी टेबल में कॉलम्स अवेलेबल है, वंस आई चेंज इट डायनामिकली, मुझे ना वैल्यूज भी चेंज होनी चाहिए। लुकअप फॉर्मूला ही लगाया है मैंने, बट आई वांट कि मैं जब भी इसको डायनेमिकली सिलेक्ट करूँ, क्योंकि ये एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में मुझे कुछ भी चीजें चेक करनी हो। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई दूसरे शीट में है जहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय आईडी मैंने लिख के रखे हैं, और वी लुकअप की मदद से मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे एवरी टाइम आई डोंट वांट टू अप्लाई फॉर्मूला फॉर ऑल द कॉलम, मैं ये ड्रॉप डाउन से चेंज करूंगी जो मुझे देखना है। अगर मुझे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट देखना है तो मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूंगी, अगर डिपार्टमेंट नहीं कुछ और चेक करना है, ज्वाइनिंग डेट फॉर एग्जांपल। नाउ दिस फॉर्मूला व्हाई इट इज शोइंग, क्योंकि इसका फॉर्मेट सही से नहीं है, जनरल है। इसको हम लोग डेट करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं चेंज करूंगी तो आई वांट कि ये डायनामिक हो, बिकॉज हम लोग लास्ट टाइम जब देख रहे थे उस टाइम पे हमने क्या किया था, वीलुकअप का जो फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया था उससे वो डायनामिक वैल्यू नहीं थी, जो हम लोग कॉलम रेफरेंस पास कर रहे थे उसको वही वो ले रहा था, ठीक है। सो नाउ विल सी हाउ टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला, ओके। सो यहाँ पे क्या है, व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे आई हैव एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट, तो मुझे अभी क्या चेक करना है कि यहाँ से जो भी वैल्यू मैं सिलेक्ट करूंगी उसके अगेंस्ट में मुझे चाहिए, ओके। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फॉर डिपार्टमेंट अगेंस्ट द एम्प्लॉय आईडी, ओके। सो फॉर दिस आई स्टार्ट द फॉर्मूला विथ वी लुकअप फर्स्ट, ठीक है। सो वी लुकअप का क्या रहेगा, इक्वल्स टू वी लुकअप, okay, I'll open the bracket. So now I have my lookup value. Lookup value कौन सी है मेरी, lookup value is my employee ID, okay, I'll give employee ID as my lookup value. Then I want to give table array. Table array again कौन सा है हमारा, table array is this, ठीक है। Again I want to fix this, ओके। देन थर्ड एट्रीब्यूट है मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी जब मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, दैट टाइम आई वांट कि ये डायनामिकली रहे, राइट। तो rather than giving यहाँ पे डिपार्टमेंट का 3 एज अ इंडेक्स, व्हाट आई विल यूज यहाँ पे मैच फंक्शन। सो आई स्टार्ट राइटिंग मैच, ठीक है। अभी मैच मैच फंक्शन जब हम लोग दे रहे हैं तो यहाँ पे मैच के एट्रीब्यूट्स देने हैं मुझे। तो मैच फंक्शन के एट्रीब्यूट्स जब हमने देखे थे उसमें क्या क्या था, लुकअप वैल्यू था। लुकअप वैल्यू क्या है तुम्हारा, लुकअप वैल्यू इज योर डिपार्टमेंट, ठीक है। क्योंकि मेरी जो वैल्यू है डायनामिक यहाँ से चेंज होगी, राइट, मैं ड्रॉप डाउन से यहाँ से चेंज करूंगी, तो ये मेरा डिपार्टमेंट रहेगा एज माई लुकअप वैल्यू। आई नीड टू फिक्स इट अगेन, बिकॉज ये जो वैल्यू चेंज होने वाली है वो एक ही बॉक्स में रहने वाला है, राइट। तो इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस पास करना जरूरी है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सेकंड क्या है मेरा, लुकअप एरे। लुकअप एरे मेरा क्या रहेगा इसमें, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, कोई बता सकता है। जब मैच फंक्शन में मैं लुकअप एरे ले रही हूँ तो वो कहाँ से लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट इज माय हेडर ऑफ द टेबल, राइट। तो हेडर ऑफ द टेबल कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे। तो आई नीड टू पास दिस एज माय lookup array for my match function, ठीक है। So I'll again fix this. So once I fix this, देन आई हैव एन एग्जैक्ट मैचिंग, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट जो कॉलम का नेम रहेगा वो एग्जैक्ट मैच करके देखना है कि इसमें से जो भी वैल्यू आएगी उसका लेना है मुझे मैच करके। तो आई गिव अ एग्जैक्ट मैच एंड क्लोज। तो ये जो मैच फंक्शन मैंने यहाँ तक यूज किया, ये मैंने क्यों यूज किया, एट द कहाँ यूज किया, एट द प्लेस ऑफ योर कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर के जगह पे मैंने उसको डायनामिक बनाने के लिए मैच फंक्शन का यूज किया। देन व्हेन आई गिव अ कॉमा, अभी मुझे वी लुकअप का फॉर्मूला भी कंप्लीट करना है, राइट। तो वी लुकअप का फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमारा फोर्थ एट्रीब्यूट क्या था, आइदर आई वांट एग्जैक्ट मैचिंग और अप्रोक्सीमेट मैचिंग, राइट। तो अगेन आई हैव दिस एज एन एग्जैक्ट मैच, तो आई गिव 0
and I'll close the bracket for VLOOKUP formula, and I'll just click enter. So can you see now I have, when I have given this formula, it has given me as, one second, yeah, as operations for employee 2, like this. So now whenever I just change anything from my drop down, either name, okay, so I'll get the name, salary, I'll get the salary, for example like that. अभी इसका ना शायद से ये डेट हो गया है, सैलरी को विल डू अ करेंसी, और रुपीस मतलब चेंज कर सकते हो यहाँ पे जाके करेंसी में, वॉट एवर दिस यू वांट यू कैन अप्लाई फ्रॉम हियर. तो ये जो अभी हम लोगों ने देखा फॉर्मूला, इसमें किसी को कुछ डाउट है? यस गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड. एम आई ऑडिबल? यस. डू यू वांट मी टू रिपीट? किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लाइक फ्रॉम मैच फंक्शन एंड हाउ वी यूज दैट मैच इन योर वी लुकअप फॉर्मूला? यस. एनीबडी? Guys, you can unmute yourself and speak because we are not connected offline today. You guys can respond to me. Vaibhavi, you understood or any doubt? Yes, I got it. Okay, then yeah, let's move on to next. So this was about your match and using match in your VLOOKUP. Okay. Moving on to next, we have xlookup. Okay. So some other day, someone has asked me one question, that is it possible, because वी लुकअप में हम लोग क्या देख रहे थे कि जो भी तुम्हारा लुकअप वैल्यू है वो तुम्हारा ऑलवेज शुड बी इन योर लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ योर टेबल. ठीक है. सो शी वाज आस्किंग मी इफ इट इज पॉसिबल कि मेरा जो लुकअप वैल्यू है वो कहीं बीच में प्रेजेंट है, जस्ट लाइक दिस कस्टमर आईडी, इट इज प्रेजेंट एट द थर्ड कॉलम ऑफ माई टेबल. ओके. एंड आई वांट टू गो बैक एंड हैव अ लुकअप ऑफ सम वैल्यू. जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी को लुकअप वैल्यू कंसिडर करके मुझे उसका ऑर्डर आईडी निकालना है. सो दिस इज लाइक आई एम गोइंग बैक. ओके. वी लुकअप में हम लोग क्या कर रहे थे, वी लुकअप में हमारा जो वी लुकअप का लुकअप वैल्यू था वो हमारा लेफ्ट मोस्ट कॉलम में था, एंड वी वर लाइक हैविंग एंड चेकिंग द वैल्यूज फ्रॉम द एडजेसेंट कॉलम्स. ठीक है. तो इसके आगे वाले कॉलम्स में से हम वैल्यूज देख रहे थे. सो फॉर हैविंग लाइक फुलफिलिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, जो वी लुकअप का एक ड्रॉबैक है जिसमें यू कैन नॉट गो एंड चेक वैल्यूज फ्रॉम बियॉन्ड कॉलम्स. ओके. तो वो हम लोग एक्स लुकअप से कर सकते हैं. ओके. सो एक्स लुकअप में क्या है, अभी जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो जो बनाया है, व्हाट आई हैव अ कस्टमर आईडी हियर. ओके. विच इज माय थर्ड कॉलम ऑफ माय टेबल. ओके. यहाँ से मुझे फाइंड करना है ऑर्डर आईडी. ओके. सो आई एम जस्ट गोइंग बियॉन्ड दिस. तो इसमें एक्स लुकअप में क्या है, एक्स लुकअप में वी डोंट हैव एनी कंडीशन की योर जो लुकअप कॉलम होता है वो तुम्हारा लेफ्ट मोस्ट ही होना चाहिए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें. ओके. so this is the extended lookup, you can say, for x lookup. There is no long form like x lookup ka kya, but I can just say that it has some extended benefits. Okay. So yes, so in this case we have to find customer, we have customer id as my lookup value, and I want to find order id. Okay. सो फॉर दिस हाउ आई हैव द फॉर्मूला, इसमें ना थोड़े एट्रीब्यूट्स थोड़े ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली कंपेयर टू योर वी लुकअप एंड एक्स लुकअप. you have more attributes to give here in x lookup formula. So the formula starts with like equals to x lookup. Okay, then we will open the bracket. So guys, like abhi na yahan pe dhyan do, because it has like more number of attributes in it. Okay. So here, what is my lookup value? Yes, someone can respond to me. What is my lookup value here? कस्टमर आईडी. Yeah, so I'll just give the customer ID from this. जहाँ पे मुझे values find करनी है वहां से मैंने customer ID का cell reference दिया. Moving on to next, I have lookup array. ठीक है. So lookup array यहाँ पे क्या रहेगा? Lookup array is in X lookup. What do you give?
कि तुम्हारा कौन सा कॉलम से तुम वैल्यूज देख रहे हो, मतलब तुम्हारा जो कॉलम होता है, जो कॉलम से तुम्हें आई मीन टू से कि लुकअप वैल्यू का जो कॉलम है वो देते हैं हम यहाँ पे। लुकअप एरे में हम ऐसे पूरा टेबल का रेफरेंस इसमें नहीं देते, ठीक है। वी लुकअप में हम क्या कर रहे थे, लुकअप एरे में पूरा टेबल का रेफरेंस दे रहे थे। यहाँ पे क्या करना है, कस्टमर आईडी कौन से कॉलम में प्रेजेंट है उसका रेफरेंस देना है। तो आई जस्ट सिलेक्ट दिस कस्टमर आईडी, क्योंकि ये कॉलम इज माय लुकअप वैल्यू कॉलम। Again, it is necessary to fix the address for this. So using F4, I have just fixed it. Moving on to next, my next attribute is return array. Return array मतलब क्या है कि मैंने जो लुकअप वैल्यू दिया इज माय कस्टमर आईडी, ठीक है। उसके अगेंस्ट में मुझे क्या फाइंड करना है, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, ऑर्डर आईडी। तो यहाँ पे हम लोग वी लुकअप में क्या दे रहे थे, कॉलम इंडेक्स दे रहे थे, राइट। जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं उसका कॉलम इंडेक्स दे रहे थे। यहाँ पे हमें क्या देना है, रिटर्न एरे में कौन सी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है उसका कॉलम का एड्रेस दे दो, ठीक है। तो आई एम फाइंडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, लुकअप एरे में आई हैव गिवन कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी के अगेंस्ट में मुझे क्या फाइंड करना है, रिटर्न एरे में मुझे चाहिए my order ID. So I have just given the address of my order ID column. Now again I need to fix the reference for this. Okay. So once it is fixed, then the next attribute I want to give it as if not found. आप लोगों को याद है हम लोगों ने वी लुकअप में एक ये देखा था इफ एरर करके, राइट, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एरर हैंडलिंग कर रहे थे। लेट मी जस्ट क्विकली शो इट टू यू। लेट मी जस्ट कॉपी एंड कीप इट, या दिस वन। सो ये इफ एरर में आपको पता है, जब हम लोग देख रहे थे कि वी लुकअप से अगर वो वैल्यू नहीं मिल रही है तो आई वांट टू गिव इट एज वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वी लुकअप में जब ये चीज कर रहे थे तो वी हैव यूज्ड इफ एरर फंक्शन, राइट। बट एक्स लुकअप में क्या है ना, व्हेन यू आर यूजिंग एक्स लुकअप, सो यू हैव दैट एट्रीब्यूट ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर फॉर्मूला, ठीक है। तो वो फॉर्मूला से ही आप कर सकते हो। जैसे अभी हम लोग फॉर्मूला लिख रहे थे अभी यहाँ तक, इसका जो नेक्स्ट वाला था वैल्यू इफ नॉट फाउंड। इफ नॉट फाउंड मतलब क्या है कि ये अगर एक्स लुकअप से वैल्यू नहीं मिल रहा है तो व्हाट आई वांट टू शो इट, तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। मतलब एरर हैंडलिंग इसमें करने की जरूरत नहीं होती, इसमें यू कैन गिव एज फॉर एग्जांपल वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। अब मैंने दे दिया कि मेरे पास अगर एक्स लुकअप से वैल्यूज नहीं मिल रही है तो शो मी एज वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आई हैव मैच मॉडल। मैच मॉडल मतलब क्या है, अगेन इट इज सेम कि आप लोगों को मतलब एग्जैक्ट मैच करना है। एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम मतलब क्या है कि नेक्स्ट स्मॉलर आइटम मतलब कैसे देखता है वो, कि इफ आई वांट टू मैच अ वैल्यू, जैसे कस्टमर 1 है, राइट, और एल्स कस्टमर 3 है। इफ आई एम चेकिंग फॉर कस्टमर 3, इट विल चेक कि इस इससे जो स्मॉलर आइटम अवेलेबल है, ओके। सो इट विल चेक फॉर द स्मॉलर आइटम एंड गिव। सेम लार्जर मतलब कि अगर कोई वैल्यू आप दे रहे हो, वो वैल्यू के अगेंस्ट में जो भी नियरेस्ट लार्जर वैल्यू रहेगी दैट इट विल गिव। देन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच मतलब क्या है, जब भी आप कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को मैच करना चाहते हो दैट टाइम यू विल गिव इट एज 2। एंड रेगेक्स मैच करके होता है, बट जनरली वी डोंट यूज दिस वाइल्ड कार्ड रेगेक्स एंड ऑल दोस थिंग्स। Generally we use as your exact matching only, also in like xlookup, जब भी आप काम भी करते हो that time mostly you use your exact matching only. So again I will give it as exact matching here because I am checking my customer id as exact. देन उसके बाद मेरे पास है सर्च मोड। अब सर्च मोड मतलब क्या है कि हाउ यू वांट टू सर्च द वैल्यूज। इसमें क्या है, इफ आई गिव 1 इट विल सर्च फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, मतलब फर्स्ट वैल्यू से लास्ट वैल्यू तक इट विल सर्च। अगेन इफ यू गिव -1 इट विल डू अ रिवर्स। ओके, रिवर्स मतलब क्या है, लास्ट टू फर्स्ट वैल्यू सर्च करेगा। देन यू हैव अगेन बाइनरी सर्च। लाइक बाइनरी सर्च में क्या है, सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर। इट चेक्स की जब बाइनरी सर्च आप करते हो कि आपका जो मतलब जो भी कॉलम में आप लुकअप कॉलम में अगर ये सॉर्टेड वैल्यूज नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल सॉर्ट इट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डू द वट एवर सर्च यू आर डूइंग, ओके। अगेन फॉर बाइनरी सर्च जिसमें डिसेंडिंग है तो वो क्या करेगा, जो भी कॉलम आपने लुकअप कॉलम दिया
It will sort it in descending order and do a search of that. Okay, so now here we don't need to do any binary search or anything. Simply we want to search from first to last, so I'll give it as 1 here. Okay, again I will just simply repeat what all attributes we have passed. इसमें क्या है, formula starts with xlookup. I4 यहाँ पे जो मैंने I4 दिया, what is that? I have given the lookup value from the table, मतलब यहाँ पे मुझे C001 कस्टमर आईडी 001 को चेक करना है, इसलिए मैंने वो कॉलम रेफरेंस दिया. सेकंड इज योर लुकअप एरे. लुकअप एरे में क्या है कि ये जो वैल्यू है कस्टमर की वो कहाँ प्रेजेंट है, इन सी कॉलम. तो आई हैव जस्ट गिवन द एड्रेस ऑफ सी कॉलम. देन थर्ड एट्रीब्यूट इज माय रिटर्न एरे. रिटर्न एरे मतलब मुझे क्या वैल्यूज फाइंड करनी है, ऑर्डर आईडी फाइंड करनी है. तो आई हैव गिवन द रेफरेंस ऑफ ऑर्डर आईडी कॉलम. ओके, कि इसके अगेंस्ट में ये वैल्यूज फाइंड करनी है करके. देन माय फोर्थ एट्रीब्यूट इज वैल्यू नॉट फाउंड. वैल्यू नॉट फाउंड में मैंने क्या किया, इफ नॉट फाउंड मतलब अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो आई गिव माय whatever the default I want to show. Then match model. Match model is my exact matching, which I have given it here as 0. And then I have a search mode. Search mode from first to last. So I have given 1. Okay. So once I enter, okay, let me check something. I have clicked somewhere. Yeah, यहाँ पे हमारा ऑर्डर आईडी देना है हमें. Okay, so you can see I have found the order ID for this customer ID. मतलब customer ID was in my third what I can say column, and I have found the value for my first column like this. Okay, so once I double click on the fill handle, I'll get the values. ये समझ में आया आप लोगों को कैसे find किया? Yes. ओके, एनी डाउट इन एक्स लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप? कहीं पे आप लोगों को कुछ कंफ्यूज हो रहा है क्या? कोई एट्रीब्यूट्स कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर यू नो हाउ वी हैव दोस थिंग्स? ओके, ठीक है. सो वन वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू शो यू. जैसे व्हेन आई एम डूइंग एन एक्स लुकअप, ओके, so for example let's take product name. So I'll take it here. I have product name and I want to find okay, so product name के अगेंस्ट में ना कस्टमर आईडी फाइंड करते हैं. ओके, so here you guys will help me to apply the formula. Yes, someone please respond to me. Okay, so I'll just apply x lookup. Okay, what is my lookup value here? Lookup value is my wireless mouse. I'll just give the address for that. Then lookup array. Lookup array is, what is my lookup array here? Yes, you guys are attentive or not? Hello, am I audible? Am I audible to you guys? Product name. Yes. So I need to give product name, whole address. Okay. So Siddhi always responds to me. Other than that, all everybody is like, I don't know whether they are paying attention or not. Then I have return array. Okay. So return array, what I want to find it here as my customer ID. So I'll just keep this column again as customer ID, and again I'll just fix it. If I don't have a value found, I'll just keep NA or something. And then match mode, again exact matching, and first to last match we will do. Okay, so I have found this as C001, but whenever you see I just apply this formula down here. Let me just do something as wireless mouse का जो है ना, we will just duplicate this value for one of. Okay, so यहाँ पे you can see in the main table also, if I have product name तो double रह सकते हैं, right? You guys agree to this or not? कि customers मतलब एक customer same kind का product order कर सकते हैं. So if I'm just duplicating this value in the table, okay, so you can see for wireless mouse मेरे कस्टमर 5 ने भी ऑर्डर किया है और
कस्टमर 7 ने भी ऑर्डर किया है. ओके, बट व्हेन यू जस्ट ड्रैग दिस फॉर्मूला हियर. ओके, यहाँ पे इसने एन ए क्यों दिखाया, क्योंकि मैंने वो वैल्यूज ही रिमूव कर दी. ठीक है, लेट मी जस्ट ड्रैग दिस फॉर्मूला एंड let me duplicate. क्या, आई हैव अ डुप्लीकेट वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी मैं यहाँ पे वायरलेस माउस का जब मैं लुकअप कर रही हूँ ना, इट इज ऑलवेज गिविंग मी कस्टमर आईडी फॉर C001. ओके, आइदर आई हैव जस्ट गिवन, फिर से प्रोडक्ट नेम अगर मैं ये सेम टू सेम भी कॉपी करती हूँ ना यहाँ पे, प्रोडक्ट नेम्स. ओके, यू कैन सी, जब मेरा मेरा फोर्थ वैल्यू जो था वायरलेस माउस का, तो यहाँ पे कस्टमर कौन सा था. For wireless mouse, I had C005, right? Fifth customer. But again, it is showing me 001 only. फिर से मेरा जब wireless mouse after air purifier था, right? I had the value as 007, but then also it is showing 001. तो मैं ये चीज करके दिखाया, इसलिए मैंने करके दिखाया कि see, whenever you are applying any lookup formula on the column, make sure you don't have any duplicate values in that. या फिर ऐसा कोई कॉलम पे लुकअप कभी मत लगाना जहाँ पे आपका वैल्यूज रिपीट होने वाला है, जैसे प्रोडक्ट नेम हो गया या फिर कैटेगरी हो गया. कैटेगरी भी बार बार रिपीट हो सकती है, क्योंकि क्या करता है ना, जब भी आप वी लुकअप लगाते हो ऐसे कोई कॉलम पे, इट ऑलवेज चूजेस द फर्स्ट वैल्यू जो उसको मिलता है. तो जब यहाँ पे इसने वायरलेस माउस को यहाँ पे ये जो फॉर्मूला में चेक किया होगा, इट हैज सीन की फर्स्ट वैल्यू उसको C001 मिली, राइट. वायरलेस माउस का C001 मिला. उसके बाद उसने जो वैल्यूज नीचे वाले जो वैल्यूज है उसको वो कंसिडर ही नहीं करता है. तो एवरी टाइम इफ इट इज गेटिंग एनी रिपीटेड वैल्यूज ना, वो हर बार जो उसको फर्स्ट वैल्यू मिलती है वही वो शो करता है. So this is one more catch, that whenever you are applying any lookup, always apply lookup on योर यूनिक आइडेंटिफायर कॉलम, या फिर कोई आईडी कॉलम्स होते हैं या फिर यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं, उस पे ही हमेशा लगाना है लुकअप को. ठीक है, ये समझ में आया. यस. ओके, ठीक है. सो फॉर टुडे वी विल जस्ट स्टॉप here only. Tomorrow we will be seeing the pivot table and pivot chart. Either call it pivot or pivot, it's same. So we will see that tomorrow. And then we have macros left, and one project I will give you guys, jahan pe I'll provide one data set and I will give you some KPIs. You guys can do the hands on that and share the worksheet with me. एंड देन इन वन क्लास वी विल डिस्कस ऑल्सो, अगर किसी को कुछ केपीआई समझ में नहीं आता है या फिर किसी से कुछ मिस्टेक होता है, तो वी विल सी दैट ऑल्सो इन वन क्लास. So as of now, we will just need 2 lectures more to complete our, Excel batch. Okay. Ma'am, Yeah. how to take that drop down box? Drop down box. No. Okay. 1 second. I'll just show it to you. 1 second. Huh? Just allow me 1 second. Yes, yes. Okay. Yes. So हमने वो कहाँ लिया था? I guess यहाँ पे लिया था ना? What I did now, I just selected this columns. Then I went to data. Under data validation. Under data validation, I have given it as list. Can you see in the setting? I have just taken list. Okay, and then I just did an OK. So you will get the list for that particular values. Let me just show it here also. यहाँ पे अभी applied नहीं है ना, तो I'll just select this. Okay, it is applied here. यहाँ पे नहीं होगा. Okay. तो ये मैंने जस्ट सिंपल डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में जाओ, टेक द लिस्ट फ्रॉम हियर, क्लिक ओके. यू मस्ट एंटर द सोर्स. हाँ, यहाँ पे एक्चुअली जो सोर्स है ना, यू नीड टू टेक द सोर्स. कि जितने भी कॉलम्स है गिव इट एज सोर्स.
and click OK. So you will get the drop downs. समझ में आया है कैसे किया? Yes, yes, got Yeah, it. yeah. So just make sure that you're giving the source. मतलब यहाँ से ना you need to give select the columns whatever list you want to give. तो ये आप कोई बाकी इसके लिए भी कर सकते हो मतलब यू कैन इफ यू वांट कि तुम्हारे जो भी प्रोडक्ट नेम्स है ना वो अगर कोई ड्रॉप डाउन में दिखाने हैं कहीं पे इफ यू वांट टू कोई एक पर्टिकुलर कॉलम में इफ यू वांट टू शो द प्रोडक्ट के names, right? You can just select a list and you can take it like this and just click OK. So you will get all the list of your products available. ऐसे कर सकते हो, ठीक है? Okay, then we'll just stop here today and we'll continue tomorrow. So tomorrow's class will be offline, online both. Same at 5 p.m. Thank you guys. Have a nice day ahead. Bye. Ma'am, Yes, yes, Meenakshi, go ahead. ma'am, can you please share VLOOKUP and Yes, yes. HLOOKUP Yes, files? yes. Just because we were just about to have these things, no, I have not shared the sheet. Share it right away. But till our logical functions, I have Okay. shared it on the group. Okay, already. Yes, ma'am. 2 days I'll share it. Yeah. Thank you.